Good evening, ma'am. We are starting with the Ganesh Vandana. वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. Hello, ma'am. Welcome to the today's webinar. We are starting with the today's webinar, Dronacharya second episode. Over to you, Jyoti ma'am, for the today's webinar. Thank you so much. And thank you, everybody, for joining today for our second episode of Dronacharya Speaks. And before we go on to our Dronacharya for today, and before I introduce her, it is a proud privilege that I introduce my president, Dr. Ragini Agarwal ma'am, and we take her blessings. And as the patron of our society, our chapter, our association, Dr. Sharda Jain ma'am could not join today, but I would straight away then go to Dr. Ragini Agarwal ma'am, our president, to take her blessings and to take her words of pearls of wisdom that ma'am wants to deliver through this particular platform, her idea behind it. Over to you, ma'am. Thank you so much, dear Jyoti. First of all, I welcome Madam Usha Sharma as our today's Dronacharya. Dear friends, welcome to the NIGF platform. Here, we are all together, joined hand to make a regional association of North Indian gynecologists, to change the academic excellence, to know each other, and finally to serve the society for which we have given our whole life. So I thought, who is better to tell us and guide at this time? Who is already the teachers of teacher? Today we are also going to be retired, but we have certain teachers. When we are a student taking a baby step in the gynecology, they are already the teachers of teacher at that time. So today we have Dr. Usha Sharma madam, formerly Dr. Jyoti Malik, who is the joint secretary and my always the right hand, is going to introduce formally, but there are few things which I can say, which even Jyoti doesn't know, because I am from Uttar Pradesh. When we started our career in OB/GYN way back in 84, 85, there are only two names. One is Dr. Usha Sharma. Every PG know the name of Dr. Usha Sharma. And another name is Dr. Chandravati from Lucknow. Allahabad has Dr. Professor Raj Baveja. And then at that time, we can even think of the laparoscope. It was just something miracle for us. And Madam got the Padam Shri, and she has done such a great work for the population stabilization at that time in the UP, and awarded the Padam Shri for that. Not only this, she has a mentor to so many people directly and indirectly, and that is the Dronacharya. Because we all know what is a Dronacharya. Dronacharya is more famous for Eklavya, not directly for the Kaurav or Pandav. Everybody knows Dronacharya for Eklavya. So all these teachers are Dronacharya for all of us, and we are going to learn something from them. Welcome, madam, again, and over to you, Jyoti, for the format. Thank you so much, ma'am. Thank you for starting this series, because we can understand and we can know the teacher who has made so many lives. गुरु वह सूरज है जो ज्ञान का उजाला फैलाते हैं. शिक्षक वह दीपक है जो अंधकार को मिटाते हैं. और शिक्षक वह मूर्त है जो विद्यार्थियों के जीवन को संवारते हैं. तो आज हमारे द्रोणाचार्य हैं डॉक्टर उषा शर्मा मैम, और डॉक्टर रागिनी ने जैसा कि हमें बताया कि यूपी में अगर कोई एक नाम अगर बोला जाए कि डॉक्टर उषा शर्मा,
तो मुझे लगता है कि वो नाम सब उस नाम को अप्रिशिएट करेंगे, इको करेंगे और उसके बारे में एक पॉजिटिव या उनकी लाइफ को कहीं ना कहीं उन मैडम ने टच किया होगा। ज्योति, आई विल इंटरप्ट लिटिल बिट। ये जी तो मैं मैम। वो जमाने का बात कर रही हूँ ना, जब इंटरनेट नहीं था, कोई किसी को जानता नहीं था, यूपी वाले यूपी में ही जानते थे। लेकिन आज तो मैडम जो है नेशनल नेम है, एवरीबडी नोज हर। जी बिल्कुल, absolutely. So today, with the blessings of Dr. Sharda, Dr. Ragini, and Secretary General Dr. Sudha Sharma, I invite our guest, Dronacharya guest, Dr. Usha Sharma, ma'am, formally, and may I have ma'am CV, because the CV speaks volumes. Ma'am was awarded Padam Shri by the President of India in 1985, and she has been has got, नहीं मुझे पूरा पढ़ने दीजिए। अरे So नहीं। she has performed 611 laparoscopy ligations in 24 hours. शायद ये रिकॉर्ड कोई भी नामुमकिन है ये रिकॉर्ड बनाना और इसको तोड़ना, बिकॉज एक दिन में हम 5, 10, 20, 25, 30 लेप्रोस्कोपी लाइगेशन कर सकते हैं। 611 लेप्रोस्कोपी लाइगेशन 1982 में करना इज समथिंग विच इज, आई थिंक वी फील कि मैडम ऐसे ही बोल रही होगी, कैसे कर सकते हैं। सो इट इज अनइमेजिनेबल हाउ शी इज सच अ, मतलब मुझे लगता है शायद माँ दुर्गा के 6 हाथ हैं, मैम आपके शायद 12 हैं। ज्योति, यहाँ पर थोड़ा सा फिर से इंटरप्ट करूंगी, क्योंकि जो नए लोग हैं ना, वो सोच ही नहीं सकते कि उस जमाने में जो लेप्रोस्कोप होता था उसके सामने कोई मॉनिटर नहीं होता था, कोई टीवी नहीं होती बिल्कुल, थी, exactly. आंख से देख करके करना पड़ता था। हाँ, तो अभी तो हमारे पास कितनी सुविधाएं हैं और हम मॉनिटर से देख के कर सकते हैं, और जब हमें बार बार झुक के, अंदर झुक के और देख के करना है, तो 611 में आप सारा दिन झुके हुए हो, आपकी कमर का क्या हाल हो रहा है शाम तक, वो भी हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं। बट आई थिंक शी इज अ इनक्रेडिबल पर्सन, आई मस्ट से। फिर उसके बाद मैडम को शी वॉज अवॉर्डेड द इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी अवार्ड इन 1992, महिला रत्न in 1992, and the Merit Ratna in 1993. She was also awarded the Hari Om Ashram Alembic Research Award by the President of India in 93, Dr. B.C. Roy National Award for Eminent Medical Teacher by the President of India, Mahila Jyoti Award in 2002, and she was nominated by Government of India as an advisor for health and family welfare in 95 to 2002, and then again from 2004 to 2008. She got the Rashtriya Ratan Award and Gold Medal in 2005, awarded the Jewel of India Award and the Certificate of Merit in 2005. Late Professor... मेरे ख्याल में काफी है ज्योति, प्लीज। मैम बहुत है, बट मुझे लगता है हम सबको पता होना चाहिए। शायद हम मैम को जानते हैं, लेकिन इतना कुछ आपने किया है ये शायद हम नहीं जानते। तो मैं थोड़ा थोड़ा बीच में फिर से थोड़ा थोड़ा पढ़ूंगी कि she was invited by WHO Geneva as the advisor from Southeast Asia representing SAARC to formulate the guidelines for providing facilities at the primary health centers in developing countries in 1993. So what as a health facility we are enjoying has been the hard work of all these teachers who have been working for us since decades. Ma'am was nominated as a member of Consultative Group Family and Planning Commission by the Government of India. She has authored many books, she has edited many books, and she has been conferred the honorary fellowship of the Indian College of Reproductive Medicine in Feb 2025. She was awarded Legends of West UP by the Times of India Group. And next, we can also see she is not only an academic person, she is a family person. Next slide, Roshan ji. जिसमें हम देख पाएंगे the complete family, the ma'am enjoying with the on her right is her better half standing with her,
beside her, behind her, always supporting her. So I think you have a great, I think that support definitely for a woman is a must, because without that, I think we are incomplete and we cannot work as much as we want to if the better half does not support us. And I'm sure Madam has always got a big support from Sir and from the family. Next, please. So again, we see the family, the good times, the family is enjoying, and ma'am is there in the center with sir supporting her. Next, please. And this is the most precious moment, I think, of where ma'am is being awarded the Padam Shri by the President Gyani Zail Singh in 1985. So a proud moment, not for ma'am, but for any woman or any female who is standing there with taking this award. Next, please. Another Dr. B.C. Roy National Award by President of India in 1996. Hariom Alembic Research Award again by President of India in 1996. Next, please. So these are the only very few slides we have kept because we want to listen to her. And today our topic is very sensitive, very important, because we do not talk about this. And today's topic is on population stabilization, what we can do. And what Madam has done, we will listen from her, and then we will again take some take-home points from Madam's talk. Over to you, ma'am. मैम अब आप शेयर कर लीजिए मैम. मैम आप म्यूट कर लिए, अभी अनम्यूट थे, आप म्यूट कर लिए. अनम्यूट कर दिया. हाँ डन मैम. शेयर कर. So thank you very much, Dr. Ragini, for such a loving, affectionate and wonderful words you have spoken about me. And I tell you that I know Ragini for the last more than a decade. When she was just contesting for vice presidentship, I thought that she is the most hardworking and transparent person. The best thing I liked in her was कि जो दिल में है वही जबान पे है. You know, these days the problem is कि कोई भी आदमी आपके बारे में क्या सोचता है वो जानना बहुत मुश्किल है. But Ragini is a person who is always just open what she wants to say about anyone, and she always says it. You know, that really creates a wonderful and long-standing relationship between the two persons. And as you all know, she is a very, very hard-working person. She is doing so much for this NIGF that she wants the participation of each one of us, and not that it should be somebody's property. And that is why I will really congratulate Dr. Ragini Agarwal and for many programs which she has started. And Dr. Jyoti Malik, she is really very close to my heart. In every conference, whenever I meet her, I really love her, and I always say, Jyoti, तुम्हारी तरह अपनेपन वाला आदमी होना बड़ा मुश्किल है. And you know, you have to meet such persons who are really so loving and affectionate to you, like Dr. Ragini and Dr. Jyoti Malik. As Jyoti just now said that I will be talking about population stabilization, journey of India, what is new. Actually, we all know that the population stabilization is not a new thing. All of us know that there has been such a problem. See how many persons are there. But actually the problem is that we have two categories. One category is there who are not having poverty, who are illiterate, but who do not want to go for family planning. And on the other side, we have educated, literate person who knows many things about the world and about the country, but they have got only one child.
So just to say why there is why there is not population stabilization is very difficult. As all of us know that birth of a child is most beautiful creation of God. Thereby population growth is purely a natural phenomena and we cannot completely finish it forever. But unchecked population growth in India has led to population explosion, which is leading to deleterious consequences. Human beings have evolved under conditions of high mortality. We also know कि वहाँ famines होते हैं, accidents होते हैं, illness होती हैं, infections होते हैं. Probably in spite of these things, though we have a high fertility rate, the global population is being taken care of by these problems like infections, war, and famines and illness. In the 20th century, unfortunately, there was a steep fall in the mortality and a steep increase in longevity. So, there are few natural phenomena due to which we have this population explosion. And so there was a dramatic change in 2021, and 2021 the population increased a lot because the mortality was also lowered as well as the longevity was also increased. So world population now expected to reach 9 billion by 2050. Now we have to consider what is there on India's on world map. There is only 2.4% of world's land area and 19% of the population. And can you imagine that today in India we have 1.46 billion in 2025 when we expected this in 2040. So we have already crossed the maximum population in the country, in the world. Now, population explosion or overpopulation refers to a condition where the numbers of human exceed the carrying capacity of the habitat. So it is very difficult if you have got population explosion. Now, we know that what are the reasons of this population explosion? Number one, there is high birth rate due to poverty, illiteracy, and gender bias. Then decreased death rate due to advanced medical treatments and all that. And the last one, which is very important, is the migration, because India mein migrate karna is not difficult like Bangladesh and Nepal, and that is why our population has increased so much. And population stabilization, we know that when birth rate equals to death rate, it is population stabilization, and which is very, very difficult at present for India. Family welfare program in India is to promote a small family norm to achieve population stabilization. Population stabilization is still a long way off in India, unlike China, who is expected to stabilize their population by 2030. India has already overtaken China to become most populous country. And that is what I said. Now we are already 1.47, which is a matter of great concern. Now, current scenario in India is couple protection rate is 67%. Modern contraceptive use is 56%. Unmet need for family planning is 9%. So we need very, very important and efficient family planning program in India. Though we know that family planning program was started or was introduced in India in 1951, and the government of India launched its family planning program in 1952. Did anybody say anything? No, ma'am, वो कोई mistake बंद कर दें. Yes, ma'am. Yes, ma'am. India was the first country in the world to launch this program. Motive was that somehow we produce or we introduce the effective contraceptives which are cheap and available for every person. But it was not enough. And in 1970s, sterilization was promoted and abortion was legalized for women. When I took over as head of the Department of Medical College, Meerut, I was closely associated, though
I was a gynecologist and I was doing all other surgeries, everything. But then I do not know. I had so much of close association with this family planning program because I thought that this population explosion is just interfering with the various development of the country, because still we, as we all know, कि आज हम लोग 100 लोग हैं और हमारी गवर्नमेंट या जो कुछ भी हमारे इन वेरियस फील्ड्स, हम क्या करते हैं, हम 1000 लोगों के लिए खाना या सब सामान पैदा करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली हमारा जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है वो 100 की जगह 10,000 हो जाता है. सो वॉट एवर वी डेवलप और वी इंट्रोड्यूस इन द कंट्री, it is almost invisible, and it is all due to population explosion. So when I became head of the department, I said I must do something for family planning. Initially we started doing vaginal ligations and mini lap ligations, but at that time, somehow I feel that there is a problem with our government, that if there is a method which is liked by the public, they just run fast. But what I feel that if some method is being liked by the public, we should take all the precautions so that the quality of that, whatever facility we are introducing, should be ensured. But due to some or the other reason, I cannot blame anyone, but there was unpopularity, or these two methods were going into disrepute. And so seeing the lack of confidence of the public in vaginal and mini lap ligations, the government was on the lookout for a method which was daycare, painless, and 100% success rate. Then came the era of laparoscopic ligation. And this was known as a Take ki Nasbandi. And it was so popular, I can't tell you. I took the training from Kasturba Hospital, that let it be my other responsibilities and this administrative responsibilities, but I must do certainly for this population explosion and family planning. And when I took the training, the laparocator was provided to the Meerut Medical College. And when I started, there was about 15 to 20 ligations per day, and it was very, very easy for me to cope up with the number. And gradually, by the word of mouth and valiant one-day recovery, in a very short time, the number increased to 50 to 60. The single stitch technique was so popular that when I started, it was, as I said, 10 to 15, then became 15 to 60. And then what happened, that I told the CMOs and the district magistrate and the commissioners, district authorities, कि please आप ऐसा करिए, मरीज दिन भर आते हैं और हमारे मेडिकल कॉलेज में और सारे डिपार्टमेंट बहुत सफर करते हैं, तो you do one thing, that you organize some transport and take the patients from various PSCs and bring them to the medical college by 9 o'clock or 9:30, we will operate. Then you know what happened? In the morning, buses used to come to the medical college, and about 200 to 300 patients were unboarded in the medical college, and I used to operate them. And laparoscopic sterilization was so common in the medical college that, will you believe, that the other doctors started requesting me, Madam, प्लीज आप मेडिकल कॉलेज को छोड़ के कैंप्स करना शुरू कर दीजिए, नहीं हम तो एक भी मरीज भर्ती नहीं कर पाते हैं. एंड दैट वाज ट्रू. एट दैट टाइम everybody was so much scared of the government कि अगर उन्होंने फैमिली प्लानिंग के पेशेंट्स को मना कर दिया तो शायद पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ जाएगी. So that is how I thought of going out of the comfort of the medical college, and I planned to go for the sterilization camps. उसके लिए हम क्या करते थे कि I used to talk to the district magistrate and they used to plan, but those camps were organized in the various PHCs. पर उसके लिए मेरे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम चीज क्या थी कि हर जगह हमको वहां की PHC की OT की इंश्योर करते थे फॉर द क्वालिटी.
And for that purpose, I am so grateful to my team, including the staff nurses and even the bearer who used to take the patient inside the theater and used to bring the patient in his lap, because it was so difficult for me to cope up with the number of the patient. And at that time, I was so happy when I used to go for the camps. Ladies row में बैठी रहती थी. You know, it was so popular. हमें अब आजकल मेडिकल कॉलेज में एडमिट करना कितना मुश्किल पड़ता है, पर उस समय ये एक टांके की नसबंदी. I will say I was fortunate that at that time this laparoscopic sterilization came into force, and as well as my team, I was in a medical college and I had a team of 8 to 10 girls who used to go when it was 200, and as Jyoti said, I did sterilization 611 in Aligarh. So at that time, you know what we used to do? मुजफ्फरनगर गए, वहां हमने 100-200 करे. उसके आगे हम गए, हमने वहां देहरादून में करे, तो सहारनपुर में बीच में करे. तो you know, at that time it was easy because the patients were admitted the evening before. My team used to go to that place, and then when they examined everything, they used to reject few cases. And you know, at that time, it was really such a great motivation. जब मैं वहां जाती थी और लेडीज हाथ जोड़ के बैठी होती थी और मुझसे एक ही बात कहती थी, मैडम हमारा आज ऑपरेशन जरूर कर दीजिएगा, बिकॉज इफ यू विल नॉट डू माई ऑपरेशन टुडे देन सर्टेनली कल मेरी सास मुझे आने नहीं देगी. तो इसको कर, तो यू नो, ये चीजें मैं कहूंगी एक्चुअली डिजायर तो मुझ में थी, पर मोटिवेशन मुझे पेशेंट से मिला और सपोर्ट और कोऑपरेशन मुझे मेरी टीम से मिला, हु वाज एवर रेडी फॉर मी टू गो टू द प्लेस a day in the evening before and select them for me. And in October 82, as Jyoti said, it was a camp at Aligarh where I did 611, and a day before, 400 patients were already admitted. I started operation at 7 o'clock, and in between, my few girls were already examining the patients who are coming after that, who came in the evening. And continuously like this, we started at 7, at 11, a little bit for 10 minutes time we took for taking tea or only some cold drink like this. And then again 11 to 2 o'clock, then about 2:30 to 7 o'clock. And then we carried operations till 9:30 p.m. on that day. But certainly I will tell you one thing, this could have been possible, not possible, if हम लोग पहले 1 या 2 टेबल्स डालते थे, पर फिर हमने क्या किया, 4 टेबल्स डालने लगे. और what we used to do कि बाहर से जब पेशेंट्स को हम लोकल एनेस्थीसिया देते थे, एज वेल एज हम पेंजिल फिनार्गन उनको लगाया करते थे कि सेडेशन दे दें. उसके बाद उनको बाहर से एनेस्थीसिया एनेस्थेटिक लगाता था लोकल, एंड द पेशेंट वे ब्रॉट. उस समय ऐसा था, बैरा जो था एक गोदी में उठा के चारों टेबल पे मरीज को लिटा देता था. एंड माय असिस्टेंट्स, एंड एट दैट टाइम आई हैड सच ए गुड persons who were so much trained, because जब आप 2 लाख 1.5 लाख ऑपरेशन कर लेते हो तो ट्रोकार तो ऐसा लगता है कि जैसे कि कोई सुई धागे से हम काम कर रहे हैं. तो इस तरीके से डॉक्टर आशा मिश्रा, डॉक्टर निर्मल कुमार, 2-3 सीनियर पर्सन्स वर विथ मी हु यूज्ड टू पुट द ट्रोकार. एंड मेरा काम क्या होता था, और एट दैट टाइम I am so grateful to the government. They provided me 10 leprocator and 12 trocars. You know, these facilities, I think I was fortunate enough that they recognized my hard work and they provided me everything. Only due to all those facilities, I could do 611 patients. And then, as she said, that Indira Gandhi gave me that was a real gift for me. And then I got the Padam Shri, which was also, I will say, it was only the motivation of those ladies when I thought कि नहीं साहब मैं तो ये सब करके ही जाऊंगी. And उन्हीं का मोटिवेशन ऐसा था कि जो मुझको रोज मोटिवेट करता था कि कैंप्स करो. अदरवाइज
Everybody knows that it's a very, very difficult thing to leave your house at 4 o'clock in the morning to come back at 9 or 10 o'clock. But it was the motivation which actually I got from the ladies who were coming to get laparoscopic sterilization. You know that family planning program slogans इतने बने हैं. अब हम जानते हैं कि हमारे पास अब इतना लेप्रोस्कोपिक स्टेरिलाइजेशन नहीं हो रहा है. आई डू नॉट नो व्हाई. आइदर इट इज द डिसइंटरेस्ट ऑफ द, आई विल से, द ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट, or the disinterest of the national at the national level or at the political level. We know that usually politicians do not promote or do not want to say anything about family planning, because Sanjay Gandhi, when he did it, and Indira Gandhi, when he did it in 1977, they really lost. But certainly, in my opinion, if it cannot be done at the political level, at least we, you and me, can certainly do something for this population explosion and for our country. We know that there were various slogans in 1970, 2 या 3 बस, in 1980 हम 2 हमारे 2, अब आजकल जो है लड़का या लड़की 2 ही काफी, और 3 साल के बाद सेकंड बच्चा करो, so that we can promote spacing and then संपूर्ण टीकाकरण. And now I would like to say how to make these services effective. एक तो ये कि हमको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को बेटर करना चाहिए. दूसरा, ये जितने भी मेथड हैं उनकी एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, उनको हर जगह पहुंचाना चाहिए गवर्नमेंट को. इन एवरी पीएचसी दे शुड एंश्योर, एंड इन माय opinion, they should also ensure the introduction of every method to the private sector also, because इसमें कहने में कोई शर्म की बात नहीं है. आजकल 70% of the population is going to the private sector. Though we have got better facilities, we have got better accessibility of these things in government sector, but even then the persons are going to private sector. So we should make everything available in public as well as in private sector. And then we should have contraceptive methods which are affordable. And then client's preference cafeteria approach, which we know is very, very important. I always say one thing, that sometimes I see clinician, they give their choice. देखिए ये मेथड बहुत अच्छा है, but I always say that it should be cafeteria approach, and counseling and breaking the myth is very, very important. And then if you will break the myth, if you will counsel the patient, then only you will be able to maintain the prolonged acceptability and follow-up, ensuring continuation or change to permanent method if they like afterwards. And now as Jyoti told me that you can just tell us about cafeteria approach, so I can tell you that the contraceptive method, as we know, hurriedly I will tell, everybody knows, natural, artificial, abstinence, and then withdrawal and lactational amenorrhea, and then temporary and permanent, in which we know that the barrier, hormonal, IUCD, and LARC. And then we have tubal ligation and vasectomy. Actually, what I feel that we should somehow catch each and every patient, adolescent patient, for some method of family planning. And nowadays, you know, हमने IUCD भी देखा, लोगों को उसमें कभी कभी कुछ कुछ प्रॉब्लम हुई, फिर उसमें इतने ज्यादा मिथ्स हो गए कि लोगों ने उसको IUCD को लेना बंद कर दिया. उसी तरह हमारे और भी थे, पहले लैक्टेशनल एमेनोरिया, लेडीज इतना बच्चों को दूध पिलाती थी, पर ग्रेजुअली ये सब चीजें थोड़ी थोड़ी कम होती गई. जैसे जैसे एजुकेटेड लोग बढ़ते गए, वो अपने नौकरी करने लगी लेडीज, तो थोड़ी प्रॉब्लम होने लगी. So what I feel that long acting reversible contraceptives are the answer which we can provide, and implant contraception is a very good contraception where we insert a rod which liberates the progestin. So this rod, as we know, it is 4 centimeter into 2 millimeter, and it lasts for 3 years, and it is quite good for the patient. But sometimes there may be
who are a heavy smoker, there can be some problem, but otherwise it's a very, very safe method. Now I will just now discuss role as a clinician. We can play center stage role by prioritizing family planning, identifying eligible couples, catch them in adolescent, post-abortal and postpartum period. You know, as I told you, we have to take care of every eligible couple. और उन सब का जो हमें मेथड है वो बड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि हर समय आप उनको कैच नहीं कर सकते, वो नहीं आते हैं आपके पास. सो यू नो, it is always better to catch them post-abortion and postpartum period and impart information of the eligible couple regarding different methods of contraception, timely motivate them to adopt family planning methods, and advance our training into new surgical methods like PPIUCD, implanon, vasectomy, and laparoscopic tubal ligation. Now, reach the mass, but ensure the quality. The main thing is that if you do not have so many hands to support you, then don't do so many ligations. Number of ligations should not be the criteria that you are a good surgeon or you are a good person doing family planning work. But it is always better to ensure the quality of your operations, and according to that you should say. But you know, in my time, I will tell you one thing. It was not my choice that I wanted to do 300, I wanted to do 400. But it was the need of that day. The ladies were there, you could not refuse it. And so, but these days, it's not like this. The ladies are not coming. And to be very frank, the problem is that the persons who are well off, who are literate, are having only 1 or 2 child, and the persons who are really I will say poor, who are not literate, who do not know anything else, they just producing children, which we have to somehow control. Now, so counseling is very, very important. Explain family planning method. Listen to need of the concern. Actually, sometimes what happens that we force the person, but it should never be a caution. It should come from within them, because still they are satisfied with the method. It's not possible for us to persuade them to take any kind of contraception. And so to promote, and these days, you know, we should know that there are Facebook, Instagram, and YouTube, and all these things are very, very important. There is a helpline like Saksham. We should tell them, and if possible, you should try to enroll them for these helplines so that they can have all their questions, all their answers, and then they can choose the best thing which they want and then discuss their doctor. And the constraints to population stabilization, as we know, that has accelerated in India in spite of family planning program we are having for the last 60 years. But I will tell you one thing, that to be very frank, we have not failed completely. Agar aap dekhiye, to even then the decadal growth rate is falling. The contraception coverage is increasing. The number of eligible couples was already very high. So birth rate remains high because it was an old burden we are still carrying on. So we should not be disheartened, and we should try to do our best. But that is why I say that the best is to provide effective planning, family planning in postpartum period and post-abortal phase. Hit the iron when it is hot. We should continue our efforts without being disheartened, because Rome was not built in a day. Persistence is the key of success. But to implement this naturally, as I said, the training of the medical and paramedical staff is very, very important for temporary and permanent methods. And then caution is that strict quality, because
when I started doing these laparoscopic sterilization camp, all over UP I went, all over Haryana I went. There was so much of request from every place. And I went to Jammu and Kashmir also. But Jammu and Kashmir, I took my whole team with me. And there in a week, we did about 700 to 800 operations. And when everybody was saying, "Arey bhai, Musalman log nahi karte hain." But I tell you, when I talked to these Muslim ladies, they always said that no, हमारे कुरान में ये नहीं लिखा है कि हमें लाइगेशन नहीं करना है. इसको तो डॉक्टर साहब बिल्कुल इन लोगों ने पलट के इस तरीके से कर दिया है. So the main thing is, if a clinician is providing a method of contraception, you should talk to the person, because there are few things which those myths you can remove, and then you can persuade her to go for accepting a method. Now, I feel our policies towards population stabilization have been very patchy. Now, a time has come when we should make a decisive and frontal attack to contain our population, which cannot be dictated but should come from within us. So what I said, that the need of the hour is government provides many family planning facilities to the public sector. The contraceptive services are easily available in government hospital and health centers. However, many patients prefer, as I said, 70% of the population is going to private hospital and clinics. So private sector contribution in family planning is not fully included in government, and they are also not provided everything as we provide everything to the government. And so private sector should be taken care of, and they should be included actively in our family planning program. Government should integrate family welfare program with private sector healthcare. Data collection from private sector should also be strengthened. This will improve accessibility, coverage, and effective implementation of contraceptive services. Integrated efforts will help family welfare program reach a larger population. So let us join hands to contribute to make a dent on this increasing population by counseling each and every lady regarding women health and family welfare. I have a dream that we should have 100% contraceptive coverage by the gynecologist of eligible couples. Let us do our bit. As a nation, when we say, अरे भाई ये national की priority है, nation करे. Nation हम ही लोगों से तो बना है. It is only you and me who can surely make a change. I am sure that the support and cooperation of you all, I will be able to fulfill my dream. And I'm so grateful, and I really congratulate Dr. Ragini Agarwal, Dr. Jyoti Malik, and NIGF, who thought about this to have a awareness program regarding the population stabilization. These things are very, very important. But when we talk about these things, then I would like to say one thing, that when all of us are doing everything, I will like to request all the obstetrician colleagues that without your support and cooperation, we cannot just hammer this program, and we cannot achieve the results and targets we want to have. And as it is my dream, I will request you all to please support and cooperate me to fulfill my dream. And I will request you, whenever you are sitting in your OPD, please give 2 minutes to every lady, whether she is suffering from some infertility, then certainly you will not talk, but she is suffering from anything else, any disease she is suffering, it is endometriosis or whatever, AUB or anything, but please talk to her about family planning, because till you will not do it, I don't think we will be able to hammer our population. And as I said,
तुम कितना भी डेवलपमेंट कर लो, पर अगर उसको इस्तेमाल करने वाले 10 के 100 और 100 के 10,000 होंगे तो हमारे कोई भी एफर्ट्स काम नहीं होंगे। पर आपका और मेरा persuasion will certainly make difference, and those persons will come and we can ensure that they are taking something, but certainly you will have to give time for these things. And so what I will request you, that don't think that the population is stabilization is the problem or is the responsibility of the nation. It's the responsibility of all of us, because nation has got societies, nation has got places, and then the nation has got families, and it is only the families who suffer in the end. So what I feel that, as I said, that I really congratulate Ragini and Jyoti that they have organized this, because this is such an important program, such an important problem, जिसको टैकल करे बगैर हम किसी भी तरीके का डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं. सो माय ड्रीम इज whenever a child is born, it should always like the first child that I was planned, not like this other two childs who said I was not and me neither. If all the children are like the first child, I can assure you that our country will certainly progress. But we all should support and cooperate in this venture. Thank you very much, Jyoti. Thank you so much, ma'am. Thank you. Actually, that was so very motivating. And as you said, without the role of the obstetrician gynecologist, we cannot achieve it. It is not one person, it is the complete Obstetric Gynae Society of India which has to work towards this goal, and then only we can achieve it. And आपको बहुत बहुत मैं सलाम करना चाहूंगी और आपको प्रणाम, आपको चरण स्पर्श करना चाहूंगी जो आपने इतना कुछ किया है भारत के लिए, नेशन के लिए, हमारे यूपी, हरियाणा, जम्मू कश्मीर के लिए और हम सब डॉक्टर्स के लिए. तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी. पर मैं कुछ छोटे क्वेश्चंस भी पूछूंगी कुछ आपसे. एक तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि इन दिस मेगा इवेंट जो मैंने कैलकुलेट किया, आपने यू डिड 612 और 613 lap ligations, and in those 13 hours, so I've calculated that we had 780 minutes, and we did 613 operations, so there was 1.27 minute for each surgery. Jyoti, that's what I said. It's very difficult to imagine. I told you that we used to lay down 4 tables, and 4 table पे already हमारी 4 औरतें होती थी. And like I had one person who used to trocar. We used to have 12 trocars. Actually, government really helped me a lot. उन्होंने मुझे एक नई गाड़ी भी दी, वो भी दिया कि इतना ट्रैवल करती है तो, because I met an accident in which मेरी femur was broken into 4 pieces. मैं मुजफ्फरनगर से कैंप करके लौट रही थी. तो after that they realized कि इतना काम करिए तो उसको हम facilities दें. So I always say one thing, अगर तुम काम करते हो तो वो तुम्हारा काम रिकॉग्नाइज होता है. तो इस तरीके में जैसे 4 टेबल डाली, 4 टेबल में वो 4 औरतें तैयार लेटी हुई हैं. तो उसमें जो हमारे 12 ट्रोकार होते हैं उसमें से सारे ट्रोकार पड़े हुए हैं और आके वो टेबल पे रख जाते हैं. उन 4 में वो ट्रोकार डाल देती है लड़की. मैं जब बस जाती हूँ, लेप्रोकेटर लिया और मुझे करीब करीब 30 सेकंड लगते थे एक ट्यूब लाइगेट करने में. तो मैं बस एक 30 सेकंड में मैंने वो एक ट्यूब और 2 ट्यूब लाइगेट करी. आई मूव्ड ऑन टू सेकंड टेबल, देन आई मूव्ड ऑन टू थर्ड टेबल. जब तक मैं चौथी टेबल करती थी तब तक मेरी फर्स्ट टेबल पे मरीज मुझे तैयार मिलता था. और होता क्या था, वो लैब में लेके रखता था. इधर प्री ऑपरेटिव रूम होता था और इधर पोस्ट ऑपरेटिव रूम होता था. वो लैब में लेके आता था और रखता था और लैब में ले जाके बाहर लिटा देता था. सो यू नो दैट्स व्हाट आई सेड दैट लंदन टाइम्स के करस्पॉन्डेंट मिस्टर ट्रेवल फिशलॉक वाज आल्सो देयर.
सो ऐसे ही मैंने, वो मुझसे बात कर रहे थे कि डॉक्टर शर्मा, आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड, यू नो, वो हिंदी भी जानता था, यू नो, मैंने औरतों से पूछा यहाँ क्या हो रहा है, तो औरतों ने मुझसे कहा हमें ना मालूम, हमें तो ऐसा मालूम है जैसे चक्की में इधर से गेहूं डालो उधर से आटा निकलता है, वैसे इधर से औरतें जा रही थी और उधर से औरतें बाहर आ रही थी। सो यू नो, तुम्हें सब चीजों को थोड़ा बहुत अपने हिसाब से वो करना पड़ता है, क्योंकि इट वॉज नॉट दैट एक्चुअली आई वॉन्टेड टू डू सो मेनी ऑपरेशन, बट इट वॉज ए कंपल्शन फॉर मी, क्योंकि जब आपके पास वहां 700 लोगों की भीड़ लगी है तो आप कैसे मना कर दोगे, और मना कर दोगे सरकार आपको मारेगी। तो इस उसमें करके फिर मैंने कहा 4 डालो पे, तो वी यूज टू हैव परमानेंटली 5 टेबल्स इन द थिएटर। सो ये होता था कि करीब करीब 1 मिनट में एक मरीज बाहर निकल आता था, बल्कि 1 मिनट में समटाइम्स 2 पेशेंट्स बाहर निकलते थे। तो उसके उसी वजह से आई कुड मैनेज। तभी मैं हमेशा कहती हूँ कि मुझे तो जो मेरे अचीवमेंट हैं, all are due to the support and cooperation of my team, because without them I couldn't have achieved anything. थैंक यू Madam, we were Mortician. ज्योति हाँ, मैडम हाँ, की right. टीम की डॉक्टर Ragini, we were also witness यहाँ of पर हैं, जो कि खुद बताएंगी कि मैडम ने क्या किया। हाँ, Ragini ji, madam, we were witness and we were part of madam team. And जैसा कि मैडम कह रही थी, 4 नहीं 8 10 लाइक टेबल लगते थे. And even I remember when I have joined in 1997 MS Gynae, मंडे को मैडम के नाम से एक दिन में 60-70 लाइगेशन, जब तक मैं छोड़ के गई हूँ 2000 में, तब तक होता था कि मंडे की टीम में इतने सारे लाइगेशन एक साथ हम लोग ओटी में करते थे. एंड रियली मतलब मुझे लगता है कोई और कर ही नहीं सकता. एंड स्टिल like I am sitting in the department and I am now madam students and inspired by madam and in gynae. तो and अभी now भी head हम of the madam department, यार. मैडम के स्टूडेंट्स अभी भी हम सब लोग फैमिली प्लानिंग कंट्रासेप्शन पे इतना ज्यादा एम्फेसिस देते हैं. और हमारे यहाँ सब लोग जानते हैं कि हम हमेशा दिमाग में रहता है कि एज ए ऑब्स्टेट्रिशियन इट इज आवर फर्स्ट ड्यूटी कि हम इसको बहुत टाइम दें, फोकस दें कंट्रासेप्शन पे और फैमिली प्लानिंग पे. और थैंक यू मैडम, वी आर रियली प्राउड ऑफ यू कि हम आपके स्टूडेंट हैं. वी आर ब्लेस्ड. एंड और एक चीज और कहूंगी चली ज्योति, गई क्या? मैं एक चीज और करती थी कि जैसे किसी पीएचसी ने मुझसे आज ही कैंप कराया, तो मैं उनको दूसरी डेट जब तक नहीं देती थी जब तक उन सारे पेशेंट्स का फॉलो अप वो मेरे पास नहीं भेजते थे. बिकॉज यू नो चाह रही थी मैम, हाँ, कोई इन्फेक्शन कंट्रोल और वो जो हमें डर रहता है इन्फेक्शन कंट्रोल का, दैट्स व्हाट आई वांट टू टेल यू, दैट जैसे मुझे आज मान लो माछरा की पीएचसी में जाना है ऑपरेट करने, तो मेरी टीम जाएगी वहां एक दिन पहले, वो पूरा ओटी प्रिपेयर करेगी, वो पूरा जो भी स्टेरिलाइजेशन होना है, जैसे कुछ भी जो भी एंटीसेप्टिक प्रिकॉशंस लेनी है, शी विल डू. मेरा स्टाफ पूरा एक शाम पहले, एक शाम क्या एक दिन पहले चला जाता था, और वो जाके सब अपने साथ, मेरे 2 वार्ड बॉय जाते थे साथ में, और जितनी चीजें थी हम लोग सब अपने साथ लेके जाते थे, जैसे अगर वहां पे कोई भी चीज नहीं है, बट वी एंश्योर्ड कि हमें पूरी एसेप्सिस मिले थिएटर में. और जब वहां से पेशेंट जाए तो हम सारा, हमारी एक लड़की पूरा उनका नाम और पता लिखती थी, और तब हम वहां के सीएमओ से ये कहते थे कि मैं आपको, और यू नो एट दैट टाइम बड़ा अच्छा भी लगता था और समटाइम्स बड़ा अजीब भी लगता था कि मेरे घर के बाहर डीएम और कमिश्नर्स बैठे रहते थे सवेरे 6 और 7 के बीच में, क्योंकि वो जानते थे मैडम निकल जाएंगी अगली डेट लेने के लिए. तो मैंने उनसे कहा था मैं डेट दूंगी, पर मेरी शर्त एक होगी कि जब तक मुझे 7वें दिन तक उनका फॉलो अप नहीं मिलेगा मैं उस पीएचसी को दूसरी डेट नहीं दूंगी. तो इतना उसमें आई विल से दैट फ्यू टर्म. एक मैं तुम्हें केस का बताऊं कि यू नो मैं बदायूं में कर रही थी, तो यू नो व्हाट हैपेंड, जब हमने ट्रोकार डाला, टाइम तो नहीं बहुत ले रही हूँ, वी कैन कंटिन्यू. जब मैंने ट्रोकार जैसी डाला मेरी लड़की ने, तो उसमें फीकल मैटर आया जैसी उसने ट्रोकार का निकाला वो. तो मैंने कहा भाई व्हाट इज द मैटर, फीकल मैटर क्यों आया? तो मैंने उससे कहा फौरन रुको. मैंने जब उसमें देखा तो मैंने देखा कि इंटेस्टीन के एक जगह से फीकल मैटर आ रहा है. तो वहां पे सर्जन था,
तो मैंने सर्जन को कहा कि मैं ये चाहूंगी आप थोड़ा सा इसको बढ़ा के एक्सटेंड करके देखिए, बिकॉज यू नो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल फॉर एवरीथिंग। जल्दबाजी का मतलब ये नहीं है कि तुम अपना टाइम कर लो, पर जल्दबाजी वहां तक करो जब तुम क्वालिटी इंश्योर करो। एंड देन हम लोगों ने वो उधर का स्टॉप कर दिया। जो मेरी लड़कियां थी उन्होंने कुछ केसेस निपटाए, वरना हमने रात के 12 बजे तक वहां करा। और जब हमने पेट खोला तो यू नो एस्कैरिस का पेयर था अंदर, और उस पेयर का आधा आधा मुंह बाहर था और उससे फीकल मैटर आ रहा था। सो मैंने कहा अरे ये क्या तरीका, बोले ये वर्म इन्फेस्टेशन होता है और इसमें आता है। तो उन्होंने दोनों एस्कैरिस खींच के निकाले और उसको क्लीन किया और फिर इंटेस्टाइन क्लोज करी। सो यू नो दीज थिंग्स आर सच कि जब तुम करते हो ये प्रेशर तो तुम्हारे ऊपर है जो तुम हटा नहीं सकते, क्योंकि मरीज आएंगे तो तुम मना नहीं कर सकते। कई बार मुझसे लोग कहते हैं आप क्यों करती हैं 300, आप क्यों करते हैं 400। मैंने कहा जब आप वैसी जगह जाओगे तो आपको समझ में आएगा हम क्यों करते हैं, क्योंकि शायद अगर वो मरीजों को ऑपरेट नहीं करें तो शायद सीएमओ पिट जाया करते, वो जमाना ऐसा था। सो यू नो इफ एनीथिंग यू फाइंड आउट, give importance to each and everything which you see during that operation. So that was the patient who was caught like this. और इसीलिए जब मैं बाल्टीमोर और जा रही थी क्लीवलैंड वगैरह, तो मैं लंदन होती हुई गई। तो ज्योति एक बड़ी मजेदार बताऊं, वहां पे जो गायनेकोलॉजिस्ट बैठा हुआ था वो मुझसे बोला, बात होने लगी लेप्रोस्कोपिक लाइगेशन की, अरे मैडम मेरे सेक्रेटरी ने आज 4 लाइगेशंस रख दिए, यू नो इट इज सो डिफिकल्ट टू कोप अप सच ए वर्क। अब मैं उससे ये कह रहा हूँ इसमें से 2 पोस्टपोन कर दो। तो मैंने कहा अगर मैंने इससे कह दिया मैंने 611 एक दिन में करे तो ये बेहोश हो जाएगा। सो यू नो समटाइम्स नीड इज ए मदर ऑफ इन्वेंशन। तो जो कुछ मैंने किया वो मुझे इसलिए करना पड़ा क्योंकि उसके करे बगैर मैं जी नहीं सकती थी उस समय। सो दैट्स व्हाट आई से। बट हाँ सर्टेनली मेरे दिल में ये बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं जितना मैक्सिमम फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम में अपना कंट्रीब्यूशन कर सकूं उतना करूं। कुनिका इज बल्बिंग कि उसको भी कुछ बोलना है, जरूर मैडम की स्टूडेंट है। अच्छा नमस्कार मैम। नमस्कार नमस्कार बेटा। हम आपके यूजी स्टूडेंट हैं एमबीबीएस मेरठ से, कि आप प्रिंसिपल थे हमारे समय में। हाँ 1990 के बाद। तुम लोग सब सारे के सारे चंडीगढ़ आओ और मैडम से मिलो, मैडम चंडीगढ़ आ रही हैं। मैम जैसा ट्यूबेक्टमी ना हमने मेरठ जैसी झूमती हुई लेडीज और कहीं देखी नहीं। स्ट्रेचर पे सब आधे उधे नशे में एज अ इंटर्न हमने कराए भी बहुत सारे। मैम आप रियली यू आर अ वंडरफुल प्रिंसिपल। मुझे बहुत बढ़िया। मुझे ये बताइए कि वाजेक्टमी क्यों नहीं पिक हुई हमारी? ये एक टांके का सर्जरी पिक हो गया। देखो ज्योति, ये हमारी मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है। एक्चुअली फ्यू थिंग्स आर सच जो लेडीज के हाथ में नहीं है। अब लेडीज आर द सफरर्स, तो वो क्या करती हैं, अरे चलो हम ही करा लें, आदमी नहीं कर पाएंगे हम लोग। हाँ एक्चुअली जिस टाइम में मैं थी तो इट वाज ए यू नो नेशनल प्रोग्राम के हम एनएसवी को खूब पॉपुलराइज करें, लेकिन पॉपुलराइज क्या करें, जबरदस्ती संजय गांधी ने जितने नसबंदी करा दी मेल वो हो गई, उसके बाद कोई आता ही नहीं है। यू नो आई डू नॉट नो आइदर there is not much contribution of the surgeons. I will say this, like I say that the obstetricians, every obstetrician should talk to a lady and tell her that what is the importance of family planning, and without that तुम्हारी अपनी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, तुम्हारी फैमिली आगे नहीं बढ़ पाएगी, डेवलपमेंट नहीं हो जाएगा। पर I don't think general surgeon ever take दिस प्रॉब्लम टू देयर हार्ट कि हम किसी तरीके से करें। सो मैं ये सोचती हूँ कंट्रीब्यूशन ऑफ सर्जन इज रियली नीडेड, बट यू कैन नॉट फोर्स एनीवन। जैसे हमारे साथ में भी कुछ ऐसे थे तो कहते थे हम तो नहीं करते, 100 200 हमारी तो प्रैक्टिस मारी जा रही है, हमारी तो ये मारा जा रहा है। एट दैट टाइम
मेरी प्रैक्टिस बिल्कुल खत्म हो गई थी, लेकिन मैंने जब ये करा, मैंने अपने मोटिवेशन से करा. आई नेवर थॉट दैट आई विल बी अवॉर्डेड. आई नेवर थॉट कि डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज मेरा नाम पद्मश्री के लिए कर देंगी. पर जब तक कोई चीज तुम्हारे अंदर से नहीं आए, तब तक तुम किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकते हो. सो एनएसवी के लिए, मैं मेल स्टरलाइजेशन के लिए तो अब भी यही कहूंगी. बट समटाइम्स व्हाट आई फील दैट देयर आर मेनी मिथ्स which are not removed truly. So अब मेल स्टरलाइजेशन को हम ऑब्स्टिशियंस तो इतना नहीं कर सकते, बट आई रियली आई एम totally with you that vasectomy is much more easier than the tubectomy, whether it is mini lab, whether it is vaginal or laparoscopic. डॉक्टर ज्योति, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा. आई एम वेरी हैप्पी कि मतलब आपने, एक सही बात है कि मेल पार्टिसिपेशन तो ना के बराबर है हम लोग के फैमिली प्लानिंग में. दैट इज वन फैक्टर. लेकिन आपने बहुत अच्छा ये इश्यू उठाया कि व्हाई नॉट मेल, बट दिस इज ऑलवेज डिस्कस कि मेल तो ना के बराबर है हर जगह. और ही कम हो गया है मैडम. जितना टाइम आपके टाइम में था अब उतना भी नहीं रह गया. उतना भी नहीं है. उस टाइम तो आपको बोलूंगी, एक बार एक मेल ने मुझे बोला कि भाई नहीं, मेरी वाइफ का ना होकर के मेरी वासेक्टमी करवा दो. तो जो जैसे मैडम कह रही है ना, एक जनरल सर्जन को बुलाया, उसने जिस ढंग से वासेक्टमी करी, मैं अपना सर पकड़ के बैठी थी, भैया इससे तो अच्छा मैंने इसकी ट्यूबेक्टमी कर दी होती. सो लिटरली वेरी फ्यू आर ट्रेन्ड टू डू, एक्चुअली दे डोंट नो हाउ टू डू. ट्रेंड की भी बात नहीं है रागनी. वेरी फ्यू रियली अपने दिल से चाहते हैं कि हम कंट्रीब्यूट करें. जब तक आपने बहुत सही लिखा है कि लेडीज ही नहीं कहेंगी मेरे हस्बैंड की करो. ये बहुत सही लाइन है. बिल्कुल. कई बार हमें याद है कि वो जो जब मैं मेडिकल कॉलेज में थी तो उनका यही था, जी ये तो घर के कमाने वाले हैं, इनको मत बांधो, इनको कुछ हो गया तो हम सब सड़क पे आ जाएंगे. दिस वाज द मेंटालिटी. एक्सपीरियंस शेयर करूंगी. मेरे एक कार्डियक पेशेंट था मैमसी में, और हम उसको कह रहे कि भाई पेशेंट को बार बार प्रेगनेंसी करा रहे हो, हार्ट डिजीज है, तुम वेसेक्टमी करा लो. तो व्हाट ही सेड, ये तो मर जाएगी, मैं क्या दूसरी शादी नहीं करूंगा. चलो ज्योति, 5 बज गए. तो मैडम के साथ तो बैठ जाओ तो फिर समय मालूम ही नहीं पड़ता. आई नो. नहीं, it is Ragini, I always appreciate your dedication and sincerity to the subject and to propagate the knowledge. और ज्योति तो मेरे लिए बहुत प्यारी स्टूडेंट बच्ची हो है. क्या मैडम की? डॉक्टर नहीं मैम, हम बहुत अच्छी लगती हैं, इसलिए ज्वाइन कर लिया. इनका पॉपुलेशन पे जो कॉन्सेप्ट है वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है. मैडम जब भी मिलती है. डॉक्टर मधु मिनोचा जी, आप भी अपने आप को अनम्यूट करें. आप भी मैडम की स्टूडेंट हैं क्या? थोड़ी देर में जाऊँ, 15-20 मिनट में. हाँ जी मैम, गुड इवनिंग मैम. नहीं, मुझे लग रहा था कि जो भी मैडम के स्टूडेंट है वो अपनी आगे आ रहे हैं. नहीं मैम, व्हाट्सएप पे मैंने देखा, ज्वाइन कर लिया मैंने, अच्छा लगा मुझे. लेकिन मुझे लगता है कि आपने थैंक यू बोला होगा अपने आप को कि आपने वो व्हाट्सएप देख लिया और आपने ज्वाइन किया. क्योंकि जो हमने सुना वो शायद जिन्होंने नहीं सुना उन्होंने कुछ खोया है. डॉक्टर ज्योति, इसका रिकॉर्डिंग अवेलेबल कराइएगा. आई विल सर्कुलेट एवरीवेयर. सर मैंने आज इनको गो हेड दे दिया है रोशन जी को. पिछला वाला भी और ये भी, दोनों द्रोणाचार्य चढ़ जाएगा. इवन उसकी रिकॉर्डिंग भी देंगे, हम सबको सर्कुलेट भी कर देंगे. बिल्कुल. और ठीक है. आप लोगों में जो भी लाइफ टाइम ग्रुप में हैं, और सब लोग लाइव मेंबर बनो. लाइफ मेंबर टेम्परेरी मेंबर की तरह, हम उसे बरसाती मेढक कहती हूँ, टेम्परेरी मेंबर की तरह रहोगे. जब लाइव मेंबर बनोगे तभी एसोसिएशन आगे चलेगी. So with that word, I would say all the efforts and hard work that Dr. Usha Sharma ma'am, you have invested to bring out the best in us, we can never be repaid in mere words. We can only feel grateful for having a teacher like you. Shat pranam. बहुत धन्यवाद. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much to Jyoti and especially to Ragini to give me this opportunity. It was a real pleasure for me. Opportunities for us that you have shared your knowledge. बस मैं ये चाहूंगी कि जितने लोग भी आज सुन रहे हैं
आज इस प्रोग्राम का जो इन्होंने अवेयरनेस प्रोग्राम किया उसका मेरे लिए और इनके लिए गिफ्ट यही होगा that please give 2 minutes to every lady to tell her about the family planning program, because you can never progress, your country can never progress without attacking this population explosion. Thank you very much. Thank you, Thank you, madam. thank you, thank you. Bye, ma'am. Thank I you. again invite everyone to Chandigarh, 18-19 July or Yes, annual I program. will be there. Yes, yes. Yes, madam. Welcome. Ragini is Thank my you, madam. favorite, and Jyoti is very loving for me and such a wonderful. हर समय हंसती रहती है ज्योति. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you so much. Everybody, thank you. Thank you everybody. very much, Hello, Dr. whosoever has logged in today, and thank you very much, Ragini and Jyoti, for giving me this opportunity. That हम जो कहते हैं ना कि अपने उद्गार में सामने ला सकी हूँ और सबको बता चुकी हूँ. Thank you so much. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, ji. Thank you. God मैडम bless you. आपको तो जितना सुने उतना कम है. नहीं, नहीं. Thank Wish you all a very healthy, happy, and bright you. future. Thank you, madam. Thank you so much. Thank you. Namaskar.